Shall I start? Atul bhai, please start. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્તર પ્રદેશ ફેડરેશન મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન મહાત્મા સુધી પહોંચવાનો આપણો માર્ગ ના વક્તા ભાસ્કર તેંડુલકરજી, મૃણાલ જોશીજી, અવિનાશ મિશ્રાજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden Oh, light, hidden light, shining in in every every creature. creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, Embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી તરભાઈ મુલસીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. जी नमस्कार बहुत बहुत. और मुझे लग रहा है कि तेंदुलकर जी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए वापस, शायद थोड़ी देर में करेंगे. तो मृणाल जी, मैं आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मराठी में आज के विषय का वो करें. पूना लॉज से संबंधित हैं. हेलो हेलो, हाँ आ गए हेलो आप? हेलो, हाँ बोलिए एम तेंदुलकर आई जी. ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल. हाँ, शायद वीडियो may not be Yes, working, you can so start. If you are I can start. not getting the video, it's all right. But Okay. you can start. So 1 minute. Huh. Otherwise, if you need more time, I will ask request Mrinal ji to go ahead in Marathi. By that time, you can fix it. Hello. Yes, sir. बोलिए. So today our topic is our way. Tendulkar ji, just let me give your introductions. Okay. Yeah. Okay. Okay. So Tendulkar ji video is off. It's no problem. We can still hear him. So he is BSc honors and MA in LLB and worked for government and private organizations and NGOs in responsible capacities. Also in many management institutes as visiting faculty and project guide. He is a member of Pune Lodge over 40 years, ex-secretary of Marathi Theosophical Federation, ex-president of Pune Lodge, ex-editor of Theosophical Biomantra. He is also national speaker and visited many lodge organizations. And of course, in Triveni, he comes with such wonderful subjects as today. Please go ahead, sir. Bhaskar ji. Yes, sir. Please go ahead. Hello. So sorry for the delay due to some technicalities. Yeah. Please go ahead. The video is not on. Our topic today is our way to the masters. When we think of the masters, we realize that they are way ahead on the path of evolution in relation to the rest of the humanity. As a result, it becomes more a matter of speculation to think of coming in contact with them. It may appear to many as the rarest possibility, if not impossible. The prerequisite for those
aspirants who are determined to undertake the long and difficult journey towards the masters is to precisely know who the masters are, or more appropriately, what a master is and where they are likely to be found. In this connection, I would just like to quote what one of the great disciples of a master has described, as quoted by Clara Cott. He says, suppose a master of the wisdom walked into this room, which is just possible, though not likely. You would not at first see any particular difference to ourselves, for the master is still a man, but you would see a very distinguished and splendid looking man having a perfectly healthy body. For not only does the master know and obey the laws of health better than we do, but he also has no evil karma from the past. We must know the nature of a master. A Mahatma or a master of wisdom is a perfect man, an adept of knowledge, power, compassion, and love. He has reached the apex of human evolution and is a Jivan Mukta. He incarnates only to hasten the process of human evolution. Otherwise, there is no reason for him to incarnate, being Jivan Mukta. A master is an adept who accepts disciples to train them and make them fit to join his band of servants in carrying forward the evolutionary process. This makes it clear that the masters look forward enrollment of such people as are interested in their own spiritual development, not for themselves alone, but for others as well. Hence, the masters are not keen to satisfy the curiosity of those who are eager to know them or their whereabouts and the extraordinary powers they possess. They don't intend to satisfy just the curiosity of the people about themselves. Hence, only those who are selfless and attracted towards the masters and looking for an opportunity to serve them and participate in their grand humanitarian work are perhaps the right candidates for Chelaship. The master has once said, a man placing himself his own good above the good of mankind is not worthy of becoming our Chela. You must live for and with other men, not with yourself. So, this is abundantly clear that a person
who is interested in the self and development of the self, is not a person to whom master is likely to turn his attention to. The difference would be in the expression of the master when they see, if we happen to meet them by any chance. The disciple whom I have referred to earlier says, first of all, you would observe in them a look of very high purpose, which lends them a faraway starry look. For the master's interior thoughts are always centered upon great impersonal issues, never on petty things concerned only with himself. Indeed, he never thinks of himself at all. So this is an indication how we should approach the masters. If we consider master as our ideal, and our intention is to come into the sphere of their influence, then we have not only to understand masters, but perhaps try to follow their footsteps in our daily life. Of course, it is not an easy thing, but what is expected is to do what we can within our powers with all our limitations. We may fail, but ultimately, failures only lead to success. They are kind, compassionate, and have understanding. Therefore, we need not worry whether we will be able to project ourselves in their eyes as right candidate for chelaship. They have said that if a person cannot find the way to chelaship, the way will find the disciple. So one need not worry who is his master and how he should approach him, as if we are going to meet someone physically in the physical world. No doubt when they are on the physical plane, they are like us only. Tendulkar ji, 3 minutes for first half. Okay. Yeah. So we have to understand their work and how we can participate in their work and make ourselves fit as a member of the band of servers. Master Cage has once clarified that every human being contains within himself vast potentialities, and they are not at liberty to withhold a chance from a
postulant than to guide and direct him into proper course. So we need not worry about the opportunity of approaching the masters, because they strictly follow the occult law. They will favor none, but at the same time, they will never break the rules. They are strictly impartial in that sense, but at the same time, they are kind and compassionate. So what Master K.H. says is an assurance as well as an encouragement to all sincere aspirants. We know how he advised C.W. Leadbeater when he was seeking clarification over the conditions of probationary period. He had said, to accept any man as a chela does not depend on my personal will. It can only be the result of one's personal merit and exertion in that direction. These statements of the master make it abundantly clear that every aspirant has the necessary potential. And if he wills and acts with right motives and firm determination, there will be no obstacle in his journey towards the master. In one of his letters to AP Senate, Master K says, nothing draws us to any outside save his evolving spirituality. Aspirant must have unshakable faith in his innate divinity and firm resolution to evolve it through conscious efforts in his daily life, guided by right thinking, right feeling, right speech, and right action. Bhaskar ji, Tendulkar ji, I think time is up. So we'll complete the latter half in the second part, sir. Okay. Yeah. Present जी, day मैं आपका परिचय देना is of चाहूंगा. growing intellect and consequent materialism. Intellect by nature makes man more selfish, separative, assertive, dominant, and is likely to be an obstacle to evolving spirituality unless moderated by healthy emotional growth. The Tendulkar ji, masters have no special affinity hello, for a person hello, possessing very high intellect hello, and Tendulkar knowledge. ji. I think here I stop. Okay. Yeah, okay, sir. I will Okay, stop sir. here. Yeah. Thank you, sir. Yeah. मिनाल जी, आपका स्वागत है. मिनाल जोशी जी ने MSc जूलॉजी में किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने पुणे थियोसॉफिकल लॉज ज्वाइन की 2017 में. वे प्राणिक हीलिंग का कोर्स भी कर चुके हैं अर्हत लेवल तक, और बहुत ही अच्छी वक्ता हैं, और जिस भी भाषा में बोलती हैं विषय पूरा में अच्छी तरह से रच बच जाता है. तो आइए मृणाल जी, मराठी में आज का अभी तक सर ने जहाँ छोड़ा है वहां तक का संवाद कीजिए. थैंक यू. सभी श्रोताओं को प्रणाम और बंधु मुंशी जी का आभार कि उन्होंने इस सभा में शामिल होने का अवसर दिया. गुरुपर्यंत पोहोचण्याचा आपला मार्ग भाग 1 सुरू करते. आपण जेव्हा महात्मे, सिद्ध पुरुष किंवा जीवनमुक्त यांच्याबद्दल विचार करतो, तेव्हा एक गोष्ट ताबडतोब जाणवते की सामान्य जनांच्या तुलनेत उत्क्रांती मार्गावर ते बरेच पुढे गेलेले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांच्याशी संपर्क साधण्याच्या विचारात साशंकता निर्माण होते. जरी अशक्य नाही तरी बऱ्याचदा ती शक्यता अतिदुर्लभ वाटते. प्रस्तुत व्याख्यानाचे हेच प्रयोजन आहे की त्या सर्व आकांक्षा बाळगणाऱ्या व दृढनिश्चय केलेल्या साधकांना माहिती व्हावे, कळावे की महात्म्यापर्यंत जाण्याचा, पोहोचण्याचा हा जो प्रवास आहे तो खूप लांबचा व खडतर आहे. महात्मे म्हणजे काय, ते कोण आहेत, ते कुठे व कसे भेटण्याची शक्यता आहे
इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न या व्याख्यानात करू. महात्मा किंवा सिद्ध पुरुष उत्क्रांती मार्गावर परमोच्च विकास पावलेली असतात. ज्यांनी ज्ञान, सामर्थ्य, करुणा व प्रेम यात सर्वोच्चता प्राप्त केलेली असते. मानवी उत्क्रांतीचे कळस गाठून जीवन मुक्त झालेले असतात. मानवी उत्क्रांती कार्याला गती देण्यासाठीच केवळ ते पुन्हा पुन्हा जन्म घेतात. महात्मे हे सद्गुरू असतात. ते शिष्यांना स्वीकारतात, शिक्षण देतात आणि उत्क्रांती कार्याला पुढे नेणाऱ्या सेवेकरांच्या कंपूत सेवा करण्याच्या लायक बनवतात. यावरून हे स्पष्ट होतंय की जीवनमुक्त हे अशा होतकरूंच्या शोधात असतात की ज्यांना स्वतःच्या आध्यात्मिक उन्नती बरोबरच इतरे जनांच्या कल्याणाची आवड आहे व झटण्यास तयार आहे. म्हणूनच जे फक्त महात्म्यांना जाणून घेणे, त्यांचा ठाव ठिकाणा माहीत करून घेणे वा त्यांना प्राप्त असलेल्या सिद्धींबद्दल माहिती करून घेणे अशा प्रकारचे कुतूहल शमवण्यासाठीच उत्सुक असतात, त्यांच्यात सद्गुरूंना स्वारस्य नसते. तर जे त्यांच्याकडे आकर्षित झालेत, निस्वार्थी वृत्तीने काम करणारे आहेत व मानवतेच्या भव्य कार्यात सहभागी होण्यासाठी संधी शोधत आहेत, असेच योग्य उमेदवार शिष्यत्वासाठी महात्म्यांकडून पाहिले जातात. गुरुदेव म्हणतात, जो मनुष्य इतर माणसांपेक्षा स्वतःच्याच भल्याचा विचार करतो, तो आमचा चेला होण्याच्या पात्रतेचा नसतो. तुम्ही फक्त तुमच्यासाठीच न जगता इतरांसाठीही जगा. सुरुवातीला होतकरू माणसास या मागण्या अवघड वाटू शकतात. म्हणूनच महात्मा केज स्पष्टीकरण देतात की प्रत्येक मनुष्यात अमर्याद क्षमता भरलेल्या असतात. त्यांना रोखण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नसते, तर त्यांना मार्गदर्शन करणे व योग्य दिशेने मार्गी लावणे हे त्यांचे काम असते. ते कुणाची वकिली करीत नाहीत, कुणी त्यांचा लाडका नसतो आणि ते नियमभंग देखील करीत नाहीत. ही एक प्रकारे त्यांच्याकडून प्रामाणिक इच्छुक होतकरूला मिळालेली खात्री व प्रोत्साहनच आहे. उमेदवारीच्या काळातील परिस्थितीवर C.W. लेडबीटर यांना त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून खुलासा होतो की ज्यामुळे इच्छुक साधकाच्या मनात आलेल्या शंकांचे निरसन होऊन जाते. महात्मा केज म्हणतात, माझ्या वैयक्तिक इच्छेवर मी एखाद्याला चेला म्हणून स्वीकारावे हे अवलंबून नाही. त्याचे वैयक्तिक गुणवैशिष्ट्य आणि त्या दिशेने केलेले परिश्रम हे कारणीभूत ठरतात. ही महात्म्यांची वाक्ये पुष्कळच स्पष्टता देतात की प्रत्येकच इच्छुक साधकामध्ये आवश्यक क्षमता असतात. योग्य ध्येयाच्या दिशेने आणि दृढ निश्चयाने त्याने महात्म्यापर्यंत पोहोचण्याची आकांक्षा बाळगली तर या प्रवासात काही अडथळे येणार नाही. A.P. सिनेट यांना पाठवलेल्या एका पत्रात मास्टर केज म्हणतात, कोणाचीही विकसित पावणारी आध्यात्मिकता आमचे लक्ष त्याच्यापासून ओढून नेऊ शकत नाही. आपल्या दैनंदिन जीवनात योग्य विचार, भावना, वाणी आणि कृती यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्या जन्मजात देवत्वावर आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्नांद्वारे विकसित होण्याच्या दृढ संकल्पावर इच्छुकाचा अढळ विश्वास असणे आवश्यक आहे. चालू युग हे बुद्धिमत्ता वृद्धिंगत होण्याचे आणि ओघाने भौतिकवादाचे, जडवादाचे आहे. जर निरोगी भावनिक विस्तार नियंत्रित केला नाही तर बुद्धी ही माणसाला निसर्गानुसार जास्त स्वार्थी, विभक्त, खंबीर, आत्मविश्वासी, प्रबळ बनवते आणि हाच आध्यात्मिकता विकसित करण्यात अडथळा ठरतो. जीवनमुक्तांना उच्च बुद्धिमत्ता ज्ञान असलेल्यांच्या बद्दल खास आत्मीयता असते असे काही नाहीये. याला अनुसरून मास्टर केज म्हणतात, तो बेकन असो वा अरिस्टॉटल, त्याचे नुसते ज्ञान आमच्यासाठी पिसाच्या वजनासारखे हलके आहे. इथे डॉक्टर ॲनी बेझंटबाईंचे वाक्य चिंतनीय आहे. त्या म्हणतात, तुम्हाला महात्म्यांच्या चरणाशी शुद्ध निर्मळ अंतःकरण हृदय ओढून नेते, ज्ञानाने भरलेला मेंदू नव्हे.
आता इथे योग्य अर्थाने आध्यात्मिकता समजून घेण्याची गरज आहे. इथे मी पहिला भाग संपवते. धन्यवाद. थँक्यू. ओके, थैंक यू. अविनाश जी, आपका वीडियो ऑन है? अविनाश जी, अनवीश जी? जी 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 तरल जी. हाँ, वीडियो ऑन. जी, वीडियो ऑन है ना आपका? 1 मिनट. हाँ, मिल गया. तो अवनीश जी का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि ये ताल्लुक रखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से. इन्होंने अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की है और पिछले 12 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत है. पिछले 3 साल से प्रज्ञा लॉज से जुड़े हुए हैं और त्रिवेणी में तो आते ही रहते हैं और काफी थियोसॉफी के लिए वहाँ कार्य भी कर रहे हैं. तो आइए आज का संक्षिप्त परिचय के साथ आज के विषय पर हिंदी में आप कीजिए. आपके पास 10 + 2 12 मिनट है. थैंक यू. धन्यवाद तरल जी. ये जी धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमेशा ही जो है हम लोगों को तरल मतलब इस त्रिवेणी में आमंत्रित करके और जो है हम लोगों को भी अनुग्रहित करते हैं. एक अध्ययन करने को मजबूर करता हूँ. अरे नहीं नहीं जी नहीं, नहीं, जी. आज का जो विषय है उसमें हम लोग ये इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग क्यों कैसे मास्टर्स के साथ में मास्टर्स की ओर जा सकते हैं या उनके रास्ते पे बढ़ सकते हैं. ठीक. मास्टर्स का जो जैसे ही हम लोग मास्टर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि वो शेष मानवता की तुलना में विकास की पथ में बहुत आगे है. परिणाम स्वरूप उनके संपर्क में आने या रहने के बारे में कई बारे में हम लोग कई बार जो है इस विषय में सोचते हैं कि किस तरह से किस प्रकार से उनके साथ में उनके संपर्क में रहा जाए, जो जिसके लिए जो है कई लोगों के लिए तो ये संभव ही नहीं हो पाता और कुछ लोग इसको कई लोगों के लिए बड़ी दुर्लभतम संभावना प्रतीत होती है. उन आकांक्षियों के लिए जो मास्टर्स की लंबी और कठिन यात्रा के लिए दृढ़ है, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो यह जाने कि मास्टर किस से प्रभावित है और उनके मिलने की संभावना कहाँ है. एक महात्मा या एक महात्मा एक आदर्श व्यक्ति जो कि ज्ञान, शक्ति और प्रेम में निपुण होते हैं और वह मानव विकास के शिखर में पहुंच गए होते हैं. जीवन से मुक्त केवल मानव विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए काम करते हैं. मास्टर वह निपुण व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षित कर उनके साथ विकासवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनको उपयुक्त बनाने में सहयोग करते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपने जैसे लोग मतलब अपनी जो विचारधारा है या जो सामाजिक उत्थान के विषय में उनकी सोच है उसको आगे उसी प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. कि मास्टर्स जो है वो ऐसे लोगों के नामांकन या की आशा रखते हैं कि जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए अपने आध्यात्मिक विकास में रुचि रखते हैं. इसलिए मास्टर उन लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने में इच्छुक नहीं होते जो उन्हें उनके पास मौजूद असाधारण शक्तियों को जानने के लिए उत्सुक है. इसलिए केवल वो वही उन्हीं लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो कि निस्वार्थ रूप से मास्टर की सेवा और मानवीय कार्यों में भाग लेने के लिए तलाश करते हैं. गुरु ने कहा जो व्यक्ति अपनी भलाई को मानव जाति की भलाई से ऊपर रखता है वह इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए योग्य नहीं है. अच्छा, हमें दूसरों के लिए क्योंकि हमें दूसरों के लोगों के लिए उनके साथ रहना था, दूसरों के साथ नहीं रहना, उनके साथ रहना है. उनके दूसरे शुरुआत में ये लोग जो लोग हैं ये बड़ी शुरुआत में मतलब आध्यात्मिकता का अर्थ केवल बुराई किए बिना जीवन जीना नहीं है. फलत हमें देवी प्रकृति के बारे में
पल पल जागरूक रहना और जागरूक रहने की मांग करता है, जो विरासत में मिली पशु प्रवृत्तियों से दबा हुआ है। लेकिन दैनिक जीवन की घटनाओं में जागृत और प्रकृति के कारण हम एक रास्ता, जो कि हमारी जिम्मेदारी प्रकृति के कारण एक जिम्मेदारी है, हम इन घटनाओं को दिव्य प्रकृति के अभिव्यक्ति के अवसर के रूप में प्रयोग करें, और ये प्रयास तब तक जारी रहे जब तक हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं पा लें, जिसे हम नियंत्रण हमें संघर्ष के बिना हासिल नहीं हो सकता। जो मास्टर्स की आंखें हमें हमारे इस आंतरिक संघर्ष को देखती और हर सफलता और विफलता के बाद हमें सांत्वना देती हैं या हमारा प्रोत्साहन करती हैं। आदर्श है और हमारे प्रयास हमारे स्वभाव की तर्ज डालने की दिशा में दोनों के बीच में एक सक्रिय बंधन बन जाता है, इस पथ पे चलना उतना आसान नहीं है, इसके विपरीत ये कठिन और चुनौतीपूर्ण पथ है। अन्यथा इसकी आध्यात्मिक शक्ति को नापने के लिए ना तो केवल शक्ति की बल्कि व्यक्तित्व छपी हुई कमजोरियों और कमी का पता लगाने का एक साधन भी। धर्म हमें दान और नैतिकता बुद्ध के मार्ग में के बारे में बताता है। ठीक है, आध्यात्मिकता में कोई विकार या कोई पल की रहती है कि जो सहज रूप से दैवी स्वभाव को के लिए दमनकारी रहता है। हमें आध्यात्मिकता के केवल बुराई आध्यात्मिकता एक जो है कठिन पूर्ण चुनौती, अन्यथा आध्यात्मिक शक्ति को नापा कैसे जाए, यह केवल शक्ति की परीक्षा बल्कि व्यक्तित्व में छपी कमियों का पता लगाने का साधन है। दान और नैतिकता बुद्ध के अष्टांग मार्ग, ईसा मसीह के 8 सुंदर और यम जैसे गुणों को सिखाता है। हमारा लक्ष्य हमें निम्न स्व व उच्च स्व में बदलने में जानबूझकर थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जीवित सभी लोगों की भलाई के लिए विचारों में व्यस्त रहना चाहिए। हम ये कभी ना भूलें, मास्टर्स का कहना है कि हम ये कभी ना भूलें कि उन सभी लोगों के लिए कुछ मास्टर्स उन सभी के लिए आदर्श आशीर्वाद है कि मास्टर का कहना है कि उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ में काम करने के अलावा भी काम करना चाहते हैं। हमें सच्चे, निस्वार्थ, निडर, विश्वास करने वाली आत्माएं चाहिए, जो मास्टर हमेशा खुले दिमाग वाले, मतलब बिना किसी पूरे दिल से पहल करने के साथ अपनी सेवाओं को देने के लिए तैयार रहें। हमें दुनिया से बाहर निकलकर अपनी और पहला कदम बढ़ाना चाहिए तथा सच्चे आकांक्षियों को कुछ भी निराश नहीं कर सकता। वह उनके पास अनंत काल तक का धैर्य, गुरु की दिव्य विद्या एवं स्वयं एक महान त्याग और थोड़ी सी तीव्रता के साथ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना संभव है। गोल्डन सीढ़ियां उन आवश्यक सीढ़ियों को दर्शाती है जिस पर चढ़कर सभी उपयुक्त उम्मीदवार दिव्य मंदिर में पहुंचने की अपेक्षा रख सकते। Yes, sir. Thank you. Or Bhaskar ji, please go ahead with the second part. Yeah. Sir. So, Yeah. Am I audible? Yes, sir. Loud and clear. So let us come back to the topic of evolving spirituality. We have said earlier that Master had said, nothing draws us to any outsider save his evolving spirituality. But many times there are misconceptions about what really spirituality is. As we have already said, it is not just very sharp intellect
that doesn't weigh very high in the master's evaluation. On the contrary, as Annie Besant had said, it is your purified heart, not your well-filled head, that draws you to the master's feet. So what is more important is an evolved soul, heart, antakaran. Many people mistake religiousness or piety as the spirituality. But we must understand that one may be intensely pious without spirituality also. Many times, even possession of psychic powers is confounded as spirituality. Primitive forms of psychic powers generally disappear with intellectual development. A sure indicator of spirituality is intuitive perception of unity of all life. As Sarvapalli Radhakrishnan had said, God is life, and recognition of that fact is spirituality. So, a man who is spiritually evolved will see this unity, will feel that universal brotherhood everywhere. Spirituality is not just leading a good life without committing any vices. Spirituality demands moment to moment awareness of our innate nature, divine nature, which remains otherwise suppressed under the inherited animal tendencies of our various vehicles. That spirituality, which separates, seeks an outlet for awakening and unfoldment in events of daily life. It is our responsibility to utilize these events in daily life as opportunities for expression of our soul, of this divine nature. We have to try and go on trying till we gain control over our vehicles. This of purification for vehicles, which cannot be achieved without constant struggle over a period of time. The unseen eye of the master watches this inner struggle, and every failure and success is followed by a consolation and encouragement from him. If the master is our ideal, and if our efforts are in the direction of molding our nature on his lines, formation of a bond of affinity between the two, that is between the master and the aspirant, is a natural result. Meditation on the nature of the master and leading a life in that light could be of considerable advantage in our spiritual unfoldment. Treading the path is not easy. On the contrary, the path is steep and thorny, arduous and challenging.
How can the growing spiritual strength be measured otherwise in absence of trials and challenges? It is not only a test of strength, spiritual strength, but it is also a means of finding out hidden weaknesses and drawbacks of personality. Religion teaches us virtues like charity and morality, Noble Eightfold Path of Buddha, or Eight Beatitudes of Christ, or Yama Niyamas of Patanjali, all provide preparatory background for a spiritual aspirant. But the path proper demands much more than that. At the feet of the Master, we have been advised to guard carefully against causes of self-deception, to spend fixed hours in self-contemplation, to work on purification of motives and correction of faults. So this is the way an aspirant has to spend his life if he is sincere, serious, and determined to approach the masters. If we aim at turning our lower self into higher self, we must deliberately practice little self-denial, try to liberate our mind from preoccupation with personal petty matters, and ensure that our mind remains occupied with thoughts of well-being of all that lives. Never forget that there is constant unseen blessings to all that lives. Master K.H. had assured A.P. Senate. Let us read what he had said in his own words. He says, I come nearer when you draw me by purified heart and readily developing will, a steady direction in which a soul is held. We have to be constantly aware, conscious of this inner movement of our soul or spirit. We have to use our willpower in our constant endeavor to stand in our spiritual being. Master has also said, I cannot work except with those who will work with us. This us refers to the members of the great white brotherhood. So we need not know who is our master, who is my master. You can choose, as Master K.H. has told Leadbeater, choose and force any master to accept you as a chela. So it depends upon the merit of the chela, not upon the personal wish of the master. The master is always on the lookout of aspirants with open mind, ready to offer services without reserve,
and with initiative wholeheartedly. We must step out of our world and take the first step towards them, towards Master's world. Nothing daunts or depresses a true aspirant. He has patience of eternity, never ceasing will to serve, never asking anything in return, remaining always content with what is and what comes. HPB had said, true occultism is a great renunciation of self. It is impossible to employ spiritual force with slightest tinge of selfishness remaining. So that is the crux of the matter. As long as there are traces of selfishness in our personality, our spiritual being remains tainted. The golden stairs depict the essential steps which all serious aspirants are expected to climb to reach the temple of divine wisdom. If we cover all the steps, we know how the demands on the aspirant are not simple. Only a selfless, determined aspirant will be able to come to satisfy those various steps which lead to the temple of divine wisdom. An aspirant need not worry about the master. His natural inclination may draw him any master. And as I mentioned earlier, one need not much worry about who is his master. One who does good work for humanity in the name of the master, and one who is pure in his motives and resolute in his actions will one day definitely succeed and will be able to reach at the feet of the master. This again emphasizes the right use of growing willpower. What HPB had said while addressing the aspirants of higher life is, I think, of great value to build confidence into the aspirants about end results of their journey on the spiritual path. One should never be in doubt or suspense about his success on the path.
he says, keep ever in mind consciousness that though you see no master by your bedside, or you hear not one whisper in silence of still night, yet the holy power is about you. Holy light shining into hour of spiritual need and aspiration. So, this unshakable faith in the breaking of the occult hierarchy, because of the occult world, in the nature of the master, which is so beautiful, extraordinary, but at the same time is attainable by every human being at the final phase of evolution. What an aspirant does is to remain on the forefront of the evolutionary journey of the humanity. He is expected to take a lead on the path, set an example for the rest of humanity, provide them confidence and inspiration, which is the purpose of existence of the masters. Their determination to remain close to this planet, to watch with great interest the progressing evolution of the humanity as a whole. So any one of the aspirants who understands the nature of this task and who learns how best he can cooperate in the work of the masters. Their work has different aspects. It may be relating to development of and purification of the bodies. It may be relating to development of character, the religiosity of the human beings. And more than that, the development of the lower mind to transform it into higher mind, so that we develop those intuitive powers to understand and come closer to the masters and to offer ourselves as a member of the band of their servers. Bhaskarji, When three we- more minutes, sir, to sum up. Yeah. When we attain that state, probably our journey on the spiritual path is more natural, though there are lot of risks and dangers involved, against which we have been warned from time to time. Any loose links remaining in our development of character, lack of morality, and things of that sort, the vices, then perhaps we remain unaware of those
deficiencies and drawbacks which till end remain as obstacles to our spiritual development. But masters are all compassionate, sympathetic, and eagerly watching our evolution. They cannot bypass the law of karma in helping us, but they are always very, very kind and sympathetic, and also eager to see us spiritually evolve. It has been said by Buddha himself to his disciple, to his bhikkhus, I will show you how the Tathagata looks on humanity. And then he has described how a hen who eats the chickens from the eggs, she knows very well that chickens will come out with their own efforts using their claws and beaks. And yet, that hen with her motherly love is always anxious to see how early chickens will come out of the egg. Same motherly love is there in the heart of the masters, who are very, very eager to see how early we become the men like them, like adepts, like perfected men. So there is always that bond, that affinity to draw us towards them. All depends on how we understand that and how positively we respond to them. If what we are expected to do is done by us with our own initiative, we can take our evolution in our own hands, and then we will easily find our way to the masters. Bhaskar ji, time Thank is you. almost up. Thank Yeah. you, sir. Yeah. Mrinal ji, please go ahead with your Marathi version. Thank you. थँक यू मुंशीजी. Yeah, थँक यू yeah. तेंडुलकरजी. थँक यू Yeah. मिश्राजी. आता इथे योग्य अर्थाने आध्यात्मिकता समजून घेण्याची गरज आहे. बरेच लोक आध्यात्मिकता व धर्मनिष्ठा यात गल्लत करतात. एखादा खूप धर्मनिष्ठ असेल पण धार्मिक आध्यात्मिक नाही. अनेक वेळा मानसिक शक्तींचा ताबा व आध्यात्मिक सामर्थ्य यात गोंधळ केला जातो. प्राथमिक स्वरूपातील मानसिक शक्ती या साधारण आध्यात्मिकतेची खात्रीशीर खूण म्हणजे समस्त जगताची एकात्मता आंतरिक आकलनाद्वारे जाणणे. जसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणतात, परमेश्वर, जीवन आणि त्याची ओळख म्हणजे आध्यात्मिकता. कोणतेही दुष्कृत्य न करता फक्त चांगले आयुष्य व्यतीत करणे म्हणजे आध्यात्मिकता नव्हे. आध्यात्मिकता क्षणोक्षणी आपल्या आंतरिक दैवी स्वरूपाविषयी जागरूक राहण्याची मागणी करतं, की जे विविध देहांच्या वाळशाने पशुतुल्य प्रवृत्तींखाली दबले गेलेले असते, पण दैनंदिन जीवनातील विविध घटनांद्वारे जागृत होण्याचा व मूळ स्वरूप उलगडण्यासाठी बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधित असते. ही आपली जबाबदारी आहे की अशा रोजच्या घटनांचा उपयोग करून दैवी स्वरूप व्यक्त करण्याची संधी घेत राहणे. आपल्या इंद्रियांवर ताबा मिळेपर्यंत प्रयत्न करणे व प्रयत्न करत राहणे चालू ठेवले पाहिजे. खूप काळ सतत संघर्ष केल्याखेरीज शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. हा आंतरिक संघर्ष महात्मे
अंतःचक्षूंनी पाहत असतात आणि प्रत्येक यश अपयशाला त्यांच्याकडून प्रोत्साहन व सांत्वन मिळत असतं. जर जीवनमुक्त आपले आदर्श आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणे आपल्या स्वभावात बदल करण्याच्या दिशेने प्रयत्न चालले, तर स्वाभाविकपणे त्यांच्यात व आपल्यात आत्मीयतेचे बंध निर्माण होतात. महात्म्यांवर, त्यांच्या स्वभाव गुणवैशिष्ट्यांवर ध्यान करून त्या प्रकाशात आपले जीवन व्यतीत केल्यास उल्लेखनीय लाभ मिळू शकतो. मार्गक्रमणा सोपी नाहीच आहे. उलट खड्या चढाची काटेरी, कठीण आणि आव्हानात्मक आहे. पण मग त्याशिवाय आध्यात्मिक शक्तीची वाढ, प्रगती कशी मोजता येणार? ही फक्त ताकदीची परीक्षा नाही, तर आपल्यातील कमतरता, छुपे कच्चे दुवे शोधण्याचेही साधन आहे. धर्म आपल्याला धर्मादायता आणि नैतिकता सारखे सद्गुण शिकवतो. बुद्धांचा अष्टांग मार्ग, जिजसचे परमानंद वचने, पतंजलींचे यमनियम हे आध्यात्मिक साधकासाठी पूर्वतयारी करणारी पार्श्वभूमी आहे. परंतु खरा मार्ग अधिक काही मागतो. ॲट द फीट ऑफ द मास्टर मध्ये आम्ही सल्ला दिलाय, स्वतःच्या फसवणुकीच्या कारणांविरुद्ध काळजीपूर्वक पहारा द्या. आत्मचिंतनात ठराविक वेळ व्यतीत करा. हेतूंचे शुद्धीकरण व दोष निवारणावर काम करा. जर आपल्या कनिष्ठ देहाला वरिष्ठ देहाकडे वळवण्याचे लक्ष्य असेल, म्हणजे देहात्म्याकडून जीवात्म्याकडे जायचे लक्ष्य असेल, तर मुद्दामहून आपल्यातील अहमला नाकारण्याचा सराव केला पाहिजे. वैयक्तिक भौतिक लालसांनी व्यापलेल्या मनाला मुक्त केले पाहिजे. त्याऐवजी जगाच्या कल्याणाच्या विचारांनी मन भरले पाहिजे. कधीही विसरू नका, अशा पद्धतीने जगताना सतत अदृश्य रूपाने आशीर्वाद बरसत असतात. मास्टर केज यांनी एपी सिनेट यांना आश्वस्त केले होते, जेव्हा शुद्ध अंतःकरण व विकसित होणारी इच्छाशक्ती तू माझ्या दिशेने स्थिर करशील, तेव्हा मी तुझ्या अधिक जवळ येईन. आत्मस्वरूपात राहण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणाऱ्यासाठी आमची इच्छाशक्ती आम्ही वापरतो. महात्म्यांनी हेही सांगून ठेवले, जे आमच्या सोबत काम करणार त्यांच्याशिवाय मी काम करू शकत नाही. म्हणजे श्वेत संघातील सदस्य काम करू शकणार नाहीत या होतकरू कार्यकर्त्यांशिवाय. आम्हाला सच्चे, निस्वार्थी मनाचे, निर्भय, विश्वासार्ह आत्मे पाहिजेत. महात्मे नेहमी अशा साधकाच्या शोधात असतात, जो खुल्या मनाचा, हातचे राखून न ठेवता सेवा देणारा आणि संपूर्ण मनाने पुढाकार घेणारा असतो. आपण आपल्या जगातून एक पाऊल बाहेर टाकू आणि त्यांच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलू. खऱ्या उमेदवाराला कधीही निराशा येत नाही, तो कचरत नाही. शाश्वतासाठी त्याच्याकडे संयम असतो. परतफेडीची अपेक्षा न करता पडेल ती सेवा करण्याची त्याची इच्छा कधीच कमी होत नाही. जे वाट्याला आलंय त्यात तो नेहमी समाधानी राहतो. HPB म्हणाल्या होत्या, खरा गूढवाद म्हणजे स्वचा महान त्याग करणे. थोडा जरी स्वार्थाचा लवलेश बाकी असेल तरी आत्मशक्ती वापरणं अशक्य होतं. ज्ञानाच्या मंदिरात पोहोचण्यासाठी द गोल्डन स्टेअर्स मध्ये चित्रित केलेल्या आवश्यक पायऱ्यांवरून सर्व विवेकी इच्छुकांनी चढणे अपेक्षित आहे. शेवटी साधकाने आपले सद्गुरू कोण याची चिंता करू नये. नैसर्गिकपणे साधकाचा झुकाव खास महात्म्यांकडे नसला तरी काळजी करू नये. मास्टर केज स्पष्ट करतात, कोणत्याही महात्म्यांना निवडा, त्यांच्या नावे सत्कर्मे करा आणि मानवासाठी चांगले कार्य करा. निर्मळ राहा आणि दृढ राहा. वाढत्या इच्छाशक्तीच्या योग्य वापराच्या महत्वावर पुन्हा जोर दिलाय. HPBच्या शब्दांनी सांगता करूया, ज्यात त्यांनी उच्च मार्गावर जीवन घालवू इच्छिणाऱ्यांना म्हटले आहे, तुमच्या मनाच्या जाणीवेत कायम ठेवा की जरी महात्मे
तुमच्या जवळ दिसत नसले, रात्रीच्या नीरवतेत त्यांची कुजबुज ऐकू आली नाही, तरी ती पवित्र शक्ती तुमच्या जवळ आहे. तो पवित्र प्रकाश तुमच्या आध्यात्मिक गरजेच्या वेळी चमकत आहे आणि तुमच्या आकांक्षेतही. धन्यवाद. थैंक यू मृणाल जी. और मैं अभी अविनाश अवनीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हिंदी में अपना भाग का समापन करें. 10 मिनट का समय है आपके पास. थैंक यू. अनम्यूट कीजिए सर और शुरू हो जाइए. थैंक यू. धन्यवाद तरल जी. यहाँ अध्यात्म को सही तरीके से समझने की समझने की भूल करते. आध्यात्मिकता के बिना कोई भी अत्यंत पवित्र नहीं हो सकता. कई बार मानसिक शक्तियों का आध्यात्मिकता के रूप में स्थापित है. मानसिक शक्तियों के प्रबल रूप आमतौर पर बौद्धिक विकास के साथ गायब हो जाते हैं. आध्यात्मिकता एक निश्चित संकेतक की एक सहज धारणा है. जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि जीवन ईश्वर जीवन है और उसकी पहचान ही आध्यात्मिकता है. आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ अच्छा जीवन जीना नहीं है. यह कोई विकार या कोई पल पल की मांग करता हुआ नहीं है. यह हमारा एक सहज दैवीय स्वभाव है हमारे. लेकिन कौन सी आध्यात्मिकता का अर्थ केवल बुराइयों के बिना जीवन जीना नहीं है. यह हमारी सहज दैवी प्रकृति के बारे में पल पल जागरूकता की मांग करता है, जो कि विरासत में हमें पशु प्रवृत्तियों से दबा हुआ रहता है, लेकिन दैनिक जीवनों की घटनाओं में जागृत और प्रकटीकरण के लिए एक रास्ता तलाशता है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन घटनाओं को इस दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति के अवसर के रूप में उपयोग करें. और यह प्रयास तब तक जारी रहना चाहिए जब तक हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं पा लेते, जिसे हम नियंत्रण, संघर्ष और प्रयास के बिना नहीं हासिल कर सकते. गुरु की, मास्टर्स की अदृश्य आंखें इस आंतरिक संघर्ष को देखती हैं और हर विफलता और सफलता के बाद उनकी ओर से सांत्वना और प्रोत्साहन भी मिलता है. यदि गुरु हमारा आदर्श है और यदि हमारा प्रयास हमारे स्वभाव को की तर्ज पर डालने की दिशा में है, तो दोनों के बीच में सक्रियता का बंधन बनना स्वाभाविक. गुरु का स्वरूप पर ध्यान करना और उस प्रकाश में अपने जीवन को जीना काफी फायदेमंद हो सकता है. पथ पर चलना कठिन है. इस पथ पर चलना कठिन है. इसके विपरीत यह कठिन, कांटेदार और चुनौतीपूर्ण पथ है. अन्यथा बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को आप कैसे माप सकते हैं? यह न केवल शक्ति की परीक्षा है, बल्कि व्यक्तित्व में छुपी हुई कमजोरी और कमियों का पता लगाने का एक साधन भी. धर्म हमें दान और नैतिकता, बुद्ध के अष्टांग मार्ग, ईसा मसीह के 8 मार्ग और यम के गुण से सिखाता है. हमारा लक्ष्य अपने निम्न स्व को उच्च स्व में बदलना है. हमें जानबूझकर थोड़ा स्व का अभ्यास करना चाहिए. और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जीवित सभी व्यक्तियों की भलाई के विचार में व्यस्त रहे. यह हम कभी न भूले कि उन सभी के कुछ आदर्श आशीर्वाद, उन सभी मास्टर्स के कुछ आदर्श आशीर्वाद है, और वो जो है वो जब आप मुझे शुद्ध हृदय और आसानी से विकसित होने वाली इच्छा शक्ति के साथ खींचते हैं, एक स्थिर दिशा जिसमें आत्मा को रखा जाता है. हमने अपनी इच्छा का उपयोग में आध्यात्मिकता को बने रहने के लिए निरंतर प्रयास करने में मास्टर ने यह भी कहा है कि हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जो हमारे साथ काम करने के अलावा भी काम करना चाहते. हम सच्चे
निस्वार्थ दिल वाले, निडर, साहसी और विश्वासी लोगों विश्वास करने वाली आत्माएं चाहते हैं। मास्टर हमेशा खुले दिमाग वाले, बिना किसी हिचकिचाहट के और पूरे दिल से पहल करने के साथ अपनी सेवाएं देने में तत्पर रहते। हमें अपनी दुनिया से बाहर निकल के उनकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाना चाहिए। एक सच्चे आकांक्षी को कुछ भी निराश या नहीं कर सकता। उनके पास अनंत काल का धैर्य है। बदले में वो कुछ मांगते नहीं, वो सेवा करने की इच्छा को कभी रोकते नहीं। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। गुह विद्या स्वयं एक महान त्याग है। थोड़ी सी भी तीव्रता के साथ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना असंभव है। गोल्डन सीढ़ियों में उन सीढ़ियां आवश्यक सीढ़ियों को दर्शाती है कि जिन पर चढ़कर सभी गंभीर आकांक्षी दिव्य मंदिर तक पहुंचने की अपेक्षा रखें। अंत में साधक को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका गुरु कौन है। वह प्राकृतिक झुकाव उसे किसी की ओर आकर्षित नहीं करता। मास्टर केएम ने यह स्पष्ट किया है कि बल और आपके द्वारा चुने गए गुरु में से एक अपनी प्रतिभा में से अब अपनी प्रतिभा से में अच्छे कार्य करें, मानव जाति के लिए भोजन के लिए शुद्ध और सेवाशील रहे। यह फिर से बढ़ती इच्छा शक्ति के लिए सही उपयोग के महत्व पर जोर देता है। और उच्च जीवन के लिए आकांक्षियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने गुरु के साथ एक पवित्र शक्ति के बारे में अपने आध्यात्मिक समय चमक रहे आवश्यकता को, आकांक्षाओं को पूरी कर सकते हैं। अंत में इस बात की चिंता नहीं करते हुए कि उसका गुरु कौन है। यदि हम प्राकृतिक झुकाव में किसी को आकर्षित नहीं करता और अपनी प्रतिभा से अच्छे मानव शक्ति का भोजन का करते हैं, तो यही इच्छा शक्ति के सही हाथ जोड़ देना है। धन्यवाद अवनीश जी। और आमंत्रित सभी लोगों में से किसी को भी इस विषय में ऐड करना हो, मृणाल जी, भास्कर जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ और ऐड करना हो आपको। और ट्रांसलेशन दोनों का बहुत अच्छा हो गया जी। जी जी भास्कर जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, और कोई क्वेश्चंस है क्या, या एनी नहीं, एक्सप्रेशन? क्वेश्चंस तो कोई नहीं है, बस खाली आपके बारे में कहा गया है कि बहुत ही बढ़िया आपकी स्पीच रही और पूरे अटेंशन के साथ शैलेंद्रनाथ दत्ता जी ने भी लिखा है कि उन्होंने सुनी और टॉपिक के ऊपर बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस रहा उनका। और उसके साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि आप शायद वन ऑफ द बेस्ट थियोसॉफी के स्पीकर हैं और मुझसे निवेदन किया है कि आप बार बार आए त्रिवेणी में। तो हाँ, जरूर जरूर, आप संधि देते जाओ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ले लेंगे। जी जी बिल्कुल, जब भी डेट हो आपके पास। हाँ, खाली तो स्पीच लिख के देने में थोड़ा टाइम लगता है। वो कोई बात नहीं, I would have more frequently participated in your this thing. यस आई अंडरस्टैंड सर, एवरी मंथ आप आ ही जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और बाकी जो हम पृष्ठभूमि में पीछे करते हैं वो हमारा लुकआउट है, आपके साथ मेहनत करते हैं। और मृणाल जी धन्यवाद आपको, अच्छा रहता है तो एनकरेजमेंट भी रहती है। अमरीश जी धन्यवाद। और बताइए, अशोक लोखंडे जी भी हैं और राउत जी भी रहेंगे, शायद शिंदे जी जी रहेंगे। आप में से कोई भी जो कहना चाहे पहले कह सकता है। उषा कापड़िया जी चली गई, अगर वो भी कुछ कहना चाहती हो तो बोल। हाँ जी बोलिए अशोक लोखंडे जी। हाँ, आज का जो विषय था बहुत बढ़िया, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन किया। और थियोसॉफी में अगर किसी को पाना है तो ऐसी जबरदस्ती करके या स्वयं को ये करके न करते हुए, अगर वो सहजता से अपना अभ्यास, अपना रूटीन, जो जो थियोसॉफी में बताई गई जो बातें हैं, उसको स्वयं के अनुभव पर अपन ने उसका परीक्षण करना चाहिए।
और उसके जो परिणाम अपने को पॉजिटिव आते हैं तो आदमी और आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से जब हम अपने में लगे रहे तो गुरुदेव को मिलने की योग्यता हम अपने आप अर्जित करते हैं। लेकिन यही ध्येय रखे कि नहीं हमको गुरुदेव के साक्षात दर्शन ही होना है तो शायद हम वहां पर कम पड़ेंगे। तो यहाँ उनकी मुलाकात के लिए जन्म जन्म का बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत सारी हमारी कमियां हमको दूर करना है। तो सहजता से अगर चले तो किसी न किसी जन्म में हम गुरुदेव से मिल सकते हैं। धन्यवाद तरल जी, आप बहुत अच्छे वक्ताओं जी को और अच्छे विषय को लाते हो, इसके लिए जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपने सर, शब्दों को विराम देता हूँ। ये धन्यवाद। सर वक्ताओं का आशीर्वाद है कि वे आ जाते हैं। भाई, हाँ बोलो बोलो जस्सू भाई। I can give a hymn depicting the ideals of ES members and the ideals they aspire from us. Brahm Vidyana Prakashak. Yes. 5-minute song in Gujarati, if everybody is okay. Yeah, please go ahead. What do you want to say? Brahm Vidyana Prakashak. This is bhajan type of showing the aspirations of an ideal student, an ideal teacher. બ્રહ્મ વિદ્યાના પ્રકાશકને સ્મરું. Yeah. Yes, yes. બોલો બોલો સર. ગાઈ શકો છો એને. Okay. Please go ahead. ब्रह्म विद्याना प्रकाशक ने नियामक ने स्मरो. वाह. देहि देह विहीन सर्वे ने त्रिगुण हृदये धरो. आंतर प्रणेता मौर्य गुरु कुतुह मिने वंदन करो. शंबल द्वीपवासी मगिरी सिद्ध संग उरे स्मरो. द्वैत्व द्वंद्वो शमे सहुमा आत्मभानव देखरो. ओढ़खे सहु ऐक्यताये प्रेरणा अंतर धरू. वाणी वृत्ति विचारने मुझ भान सौ शरणे धरू. तव माट आतव कार्य तव कर कलम जिमहु आदरू. मुझ आत्मा तू रूप सुजन सौ मुझ अंतरे आदर करो. प्रेर जे प्रभु तू हवे मारू जीवन अर्पण करूं. ब्रह्म विद्याना प्रकाशक ने नियामक ने स्मरो. देहि देह विहीन सर्वे ने त्रिगुण हृदये धरो. ब्रह्म विद्याना. थैंक यू. वाह वाह वाह, बहुत सुंदर. और Very nice. Very nice. Very nice. Just congratulations. Congratulations to the masters. You know, the wind under my wings is the wind of masters, not me. Yes, Ashubhai, and it's so nice of you to join right from across the seas and also sing a wonderful song in Gujarati. Ashudan bhai, can you just give a brief of this in English if you can? This is the song which is written to praise our Mahatmas. It is the praise that they have guided us. They have provided us the intuitional force. They are all there for the well-beings of the whole humanity.
And these are the Mahatmas who are the unique in the way that we follow, the way that we adopt for the refinement of our society and for the progress of humanity. So it is the unique experience for those who try to follow the paths shown by the masters. And if we follow that path, we become more enlightened, we become more intuitive, we become less selfish, and in that way, we come to that point where the masters want us to reach. So it is really the path that we must follow. And this is the Keshwar will answer the question who has written this, perhaps Mugdhaben Hora. Yeah. No. Huh? Keshwar. No. Kamalaben Thakkar. Yeah, probably Kamalaben Thakkar, yes. Kamlaben. Are wow. Yes. Because Yes, when And I can give another one. when Hasubhai if you time started, permits. hello, when Hasubhai you started singing, suddenly the video was on of Keshwarji and she was also smiling and perhaps remembering the song, right? I can Keshwarji. give another hymn where, you know, the student assures the masters as to what Yes. he is prepared to do. Wow. Right. Yes, Harshvardhan Bhai, since you are speaking, if you want to add something, you can add. Then Shindeji, if any other people would like to add something or say something, they can just go ahead by their hands. Formally, one question that I put before Shindeji, that was about the people, those who suspect in the way that they don't have proper understanding of knowing about the masters. And sometimes it becomes a kind of thing which is not required to discuss among the people who are not aware of it. So I asked Shindeji about the particular thing of the seriousness. There is a curiosity. He used two words, curiousness and this kind of proper understanding to know about the masters. Shinde sir, I have a kind of inclination about more and more or deeper kind of understanding to go through the particular description of the masters or whatever is there in the Mahatma letters or whatever our elders, our leaders, those who have propagated this particular thing, that the masters were there and therefore, madam, that happened in London and during that procession and Madam Blavatsky came to know about the master and Madam Fadif then put this as a description and Madam Blavatsky made the master in that Hyde Park. So this was a kind of story which I heard when I was only 12 or 13. So that affected my mind at that time. And we have this kind of understanding that whatever we read about them as the story, as the anecdote or as the allegorical kind of story, but there is the force. It is the life force. And when we talk about the masters, it is only the life force. It is the intuitive knowledge. It is the real wisdom. It is not the matter to be discussed among the small talks. So I think this is what I understand. Shindeji, yes, please. Will you mean more? Yeah. The subject, Yes. the subject Thank you today is for so your very relevant to the nice masters. explanation. And if time permits, really, I can give this another hymn, which is a student assuring the masters as to what he intends to do. Yeah, let Sindhi first answer the question of Harshvardhan Bhai. Yeah, what Harshvardhan has raised, it is very true. We should be not only curious, but we must be then serious also. Only curiosity is not enough. Yes. That curiosity must convert or set into a real inquiry. And the question is, who wants to know about the master? And it is our soul which is longing for the master. Our soul itself is self-sufficient. And it is searching for the master. And what HPB says, and what you said, Harshvardhan said,
HPB met the masters means we call them as the masters of the wisdom and compassion, and we name them as the Master KH and Master Maurya. Well, our Theosophists, the elder Theosophists, they have met the masters physically. But as a Theosophist, we all, as members of the Theosophical Society, we definitely believe in the perfected beings. As HPB said, there are perfected beings. And we call them as the masters of the wisdom and compassion. So wisdom and compassion is their nature. And we call them as the masters or Mahatma, whatever it is. But the question is, who wants to know the master? It is our soul. It is our spirit. And when we understand the spirit and matter, spirit is the unorganized life or unorganized matter. Sorry, spirit is unorganized matter. And matter is unorganized life. So the question is, if we want to see or find the path to the spirit, then we must organize our life. That is the way that we must do. And what we believe is, the master is not outside. There may be perfected beings because you believe in evolution. As there is subhuman kingdom, in the same way, logically, there are superhuman kingdom also. And there are people who are ahead of us. So that we believe. But real master is within ourselves. So there is no path to the masters. The path to the masters is within ourselves. Kya baat hai? We need not seek it outside. Beautiful. And when we learn that the monad is our master, and that is the source of our spiritual energy, and with that energy, our thoughts flow, we have urge to desire or affection towards the master, and we have movement to our physical body. So thought power, willpower, and courage, this is the way to the reality. And this is to connect ourselves to our reality, whereas the reality is Nirgun Nirakara. And soul is also Nirgun Nirakara. Soul has to pass through all these vehicles to meet that master who is within us. So having living faith in the master or in the perfected being, because if what you think, you become. If you think of the perfected being, then you become more and more perfect. Thus, clinging to one thought of him, it is only with your such a dynamic will, that willpower itself finally assumes a tangible outward form. That is what it is said by the great ones. Kya baat? This willpower and this dynamic will itself finally assumes a tangible outward form. So what do you think? Then again, when Krishnamurti says pathless land, reality, master is reality, definitely, within ourselves. And it is a pathless land. We need not seek it outside. That is what I want to add in this. There are masters, there are perfected beings, and it is nice to think of them with curiosity, but that curiosity, let it set into a real inquiry. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. It always Taral sir, wonderful. Taral sir. हाँ बोलिए। आखिरी में मैं यही बोलना चाहता हूँ, शिंदे साहब को प्रणाम, मेरे सब वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो मास्टर्स को हम इस लायक बना दें कि मास्टर्स हमें चाहे कि तू कहाँ है, तू मेरे लायक, तू सक्षम हो गया है, तू एलिजिबल हो गया है मेरे लायक, मैं तेरे पास हूं, मुझको कहाँ ढूंढे रे। ये शॉर्ट में मैंने शिंदे साहब की बात को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद सभी को।
जी जी जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि शिंदे साहब आपने बहुत ही खूबसूरती से पूरे एक चीज को बांध दिया। और वही चीज जब हसू भाई ने वो गुजराती गीत में गाई, जो लिखा हुआ था उनका, माननीय किनका लिखा हुआ था, केशवर जी ने नाम बताया था, कमलाबेन ठक्कर। कमलाबेन ठक्कर। तो कमलाबेन ठक्कर जी ने भी ये पूरी बात को कितने अच्छी तरह से एक संगीत में उसमें पिरोया है, बहुत ही अद्भुत है। हाँ, आभा जी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आप? और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और भी हैं, डॉक्टर सी काले हैं, शैलेंद्र नाथ दत्ता जी हैं, जो भी कुछ कहना चाहता हो अंतिम कुछ। जी डिवाइन इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने बड़े मास्टर्स हैं। मैं खाली इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही थी जी, बोलिए। कि मास्टर्स को खोजने की जरूरत नहीं, मास्टर्स तो खोज कर ही रहे हैं। अपने आप को हम ऐसा बना लें कि मास्टर खुद हमारे पास आए, बिकॉज हमें हमें लगता है हम सर्च कर रहे हैं, वो भी सर्च कर रहे हैं। क्या बात है। तो बजाय खोजने के अपने आप को ऐसा बना लो कि वो हमें पाले, बस दैट्स ऑल। बराबर है, सही बात है। और बहुत यही थॉट बार बार सारे वक्ताओं ने कहा। मृणाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो कह सकती हैं। नहीं जी जी, हाँ हसू भाई बोलिए, फिर हम समापन की ओर The चलेंगे। moment you are attracted towards the masters, it's a clarion call from within. And, we should also realize that once we decide, that means we have decided that अनेक जन्मों का कर्म जो अपने साथ है ना, उसको हम विफल करने के लिए तैयार है। इसलिए lots and lots of karmas will start coming to you to decipher them. So we should be prepared also for that fight. Our lower nature will bring in all the thoughts, of the past past lives. So at that level, your journey becomes a bit difficult. But the masters are always with us, so they will help us. But your resilience and your strength of will is absolutely necessary. And those who are really attracted are the ones who have already joined in the past too. Yes. Neophytes will never join it. See, in Dar es Salaam Lodge, we are 150 members. Out of 150, only 40 were coming in. Out of 40, only 3 or 4 of them joined the ES group. So it says, ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે સિંહના ટોળા ન હોય, આપણે પોતાના વખાણ નથી કરતા, પણ સિંહના ટોળા ન હોય. Few of them, they rarely take the path. Yeah. Thank you, sir. And if no addition is there, we can go ahead with the ending prayers. Yes, Atul bhai, please go ahead. Unmute करिए. हाँ, हर्षवर्धन भाई। या अतुल भाई। ओके, अतुल भाई, हाँ, गो अहेड। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसन्नो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम वाह, एकदम ध्यान मग्न थे जवाय से केशवर जी, खूब खूब आभार और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जुड़े हैं। अगले मंगलवार फिर भेंट होगी। तो आज गोवा से सबको बाय बाय।